Good afternoon, everybody. I'm Sayukta from beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women, with brown colored patches on their face. They seem like freckle, like spots forming large flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a very common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities, revealed that more than 80% of the population presents skin color heterogeneity on the face, irrespective of age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spot and melasma. Indian skin tone more susceptible to pigmentary disorders. It occurs mainly in women, 90%, and 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65 years old women present a facial melasma. Melasma and hyperpigmentation generally ignored as sign of aging and often misunderstood skin condition. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. To avoid all these hassles and to keep you informed, today we are here to know about management of melasma from experts. So let's connect today with our skin expert, Dr. Monica Jain, live from Durg, Raipur, Chhattisgarh, to make aware on management of melasma. Dr. Monica Jain is a young, vibrant, and highly skilled in the field of dermatology. Dr. Jain is consultant dermatologist and cosmetologist from Durg, Chhattisgarh. Dr. Monica did her MBBS from Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur, and MD from SCB Medical College, Cuttack, Orissa. Doctor has presented several award papers in national conference, also case reports publications. Today, Dr. Monica Jain will share with us on management of melasma. A very good afternoon to you, Dr. Monica Jain. Hope you're doing good, ma'am. Yeah, fine. I'm very fine. How are you? I'm absolutely fine, and it's a pleasure to have you with us for this session. And Dr. Jain, as today we are going to talk about melasma and the management of melasma. First of all, I would like to understand and know what is melasma. Melasma है क्या? Melasma एक तरीके का pigmentary disorder है. As in when I say a pigmentary disorder, in Indian skin generally they are more concerned for hyperpigmentation rather than depigmentation. So hyperpigmentation जब हमारे face में होता है, एक browny, blackish या bluish patchy pigmentation, that means we are dealing in most of the cases with melasma. But इसका मतलब ये नहीं comes into the category of melasma. There are other certain diseases also, like planus pigmentosus or nevus of Ota, etc. Other pathological diseases apart from melasma. So diagnosis is very much important in this case management of melasma, because there are certain other diseases also which can mimic like melasma. In short, melasma is just a brownish, blackish, or bluish pigmentation over malar area of the face. Just to sum up, in short. Okay, and if we try to understand what are the main causes that cause melasma in our skin. Yeah, melasma actually, there are 3 types of melasma as we categorize in our studies: epidermal, dermal, and mixed. And that can be differentiated on the basis of what color we perceive as on examination. If we see a very brownish thing, that means it's superficial or epidermal. I am just telling the types of melasma because cause depend upon the type. I mean, different types of melasma are having different causes. So first we need to know that, then only we can target the cause and treatment. If it is brownish in pigmentation, that means it's very superficial, epidermal melasma. If it is bluish in color, that means it's deep or dermal melasma. If it is mixed brownish, bluish, blackish sort of pigmentation, that means it's mixed type of melasma. In Indian skin, mainly we deal with a deep melasma or bluish melasma, which is mainly due to sun exposure. As all of we know that India is an agricultural country. So most of our patient belongs to a category of farming group. So main cause of melasma, if I have to say one single reason, that is
then it will be sun exposure. And the other reason are hormonal disturbances, as in postmenopausal women, estrogen, progesterone, those also play a role. Also, genetics play a very important role in this melasma causation. Okay, so we'll try to, discuss all the causes and their prevention and treatment throughout the session. But before that, as you also mentioned another word, hyperpigmentation. We would like to understand, are these two words, melasma and hyperpigmentation, different or are they same? Absolutely, they are different. Okay. Absolutely, they are different. Melasma is a type of hyperpigmentation. Like all melasmas are hyperpigmented lesions, but not all hyperpigmented lesions are melasma. There are n number of causes of hyperpigmentation. It Mhm. can be photomelanosis, what we say in general term as suntan or tanning. Hyperpigmentation can be due to tanning. It can be due to medications. It can be due to any genetic disorders. It can be Mhm. due to lichen planus pigmentosus, as I said. It can be due to any nevus type of condition or etc. But melasma is a type of hyperpigmentary disorder. Right. And what are the symptoms and signs? I mean, we know, as you just explained, that, we get brown patches or blue patches all over our face, but still, any other symptoms and signs of melasma? No, this is basically a cutaneous or skin manifestation. There Mhm. are not as much signs associated with this. It's just a clinical manifestation of skin only, the superficial disease. Okay. And doctor, are there any risk factors associated with melasma, or it's just that, our appearance is what is impacted? It's just the appearance is affected. We are not having any colon diseases as such of now. But I would like to mention here, because we are specifically dealing with melasma, if this melasma patch or hyperpigmentation, I should say, if it is having a very reddish tinge in appearance, then one should go check for lupus erythematosus, which is also a sun exposed disease, but it is having slight reddish tinge that you should keep in mind. Okay, okay. So thus it's important that if we have, melasma or hyperpigmentation, we need to go and consult a doctor, right? Definitely. Because the causes can be different. Mhm. We can diagnose, I can say in a sense, not always, but we can sense that it is melasma. But what are the causes due to which you have melasma? I think you should consult a Right. specialist for that. When we were discussing the causes responsible for melasma, you said that the most common problem, especially in India, is sun, the most common cause. Yes. Now, is there a way to prevent melasma, or can by preventing or protecting our skin from the sun exposure, we can prevent melasma? Um, um, I would say there's no absolute way to prevent a melasma, but Mhm. definitely we can protect ourselves. See, sunscreen is a must in basic skincare routine also. So if you are having a genetic predisposition, as of now, if you see your mother, grandparents are having melasma, then definitely you should use sunscreen. That is the only way to prevent melasma and nothing else. And if you're taking any hormone replacement therapy, then those are the risk factors we cannot avoid. You have to take HRT if you are having those issues. हम्म। तो अगर जेनेटिक हो सकता है चूंकि, तो इसलिए अगर पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो एटलीस्ट सनस्क्रीन यूज करना हम शुरू कर दें। और Definitely. सबसे लीस्ट हम यही कर सकते हैं कि हम सनस्क्रीन को अपने स्किन केयर रूटीन का इंटीग्रल पार्ट बना दें। तो सनस्क्रीन पर थोड़ा हम चाहेंगे डॉक्टर कि आप थोड़ा Uh, एलैबोरेट करें, क्यों जरूरी? Sunscreen is see not only the patients who are predisposed to melasma, but also sunscreen is an integral part of basic skincare routine. Even though as Indian, we don't focus much on sunscreen, but actually we live in a tropical country and sunscreen must be included in basic skincare routine. So sunscreen basically तीन तरीके की होती है as of theory. We shouldn't go into that physical, chemical, and mixed type. But what we should know as patients or consumers is like you have to use sunscreen daily. Ideally, it should be applied 3 times a day, like 9 a.m., 12 a.m., and 2 p.m., like in an interval of 2 to 3 hours. Also, the amount of application should be abundant, approximately one teaspoon for one time application.
Also, it should be applied 30 minutes before sun exposure. It's not like that I have to go now, right now for sun exposure and apply it right now and just go out. The sunscreen will be just ineffective. You have to apply it at least 30 minutes before sun exposure. At least 30 minutes. Okay. So Now the these thing are the is, things you should keep in mind. Yeah. yes, yes. So you said it's important to use sunscreen daily. Reapplication is important. Amount of Yeah. sunscreen that we are applying is equally important. Now the thing is, there are people who do not go out or who had very limited sun exposure. And now, especially after COVID thing, people are working from their homes, etc., and not going out that much. Now my question is, even if they are inside their homes, are still sunscreen application important for them? Yeah, definitely yes. This is a very frequently asked question that if we are indoors, mostly indoors, then should we apply sunscreen? Or whether cloudy environment Hmm. is there or weather is there, should we apply sunscreen? There are no exceptions for sunscreen application. This is the single one rule. There are no exceptions. You have to apply sunscreen. That's it. There are no exceptions. Okay. So इस Because बात से फर्क damage नहीं takes पड़ता. place in, yeah, definitely. There are no Okay. exceptions for sunscreen. ओके सो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर जा रहे हैं, सन एक्सपोजर है या नहीं, आप घर में हैं या सिर्फ गृहिणी है, किचन में काम करती है, सनस्क्रीन तो लगाना ही है. तो Because एक बार. यस या डॉक्टर. बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सन एक्सपोजर से डैमेज हो रहा है बट जो लेडीज हैं या गृहिणी जो आप बोल रहे हैं जो अंदर रहती हैं वाइल कुकिंग जो हीट रिलीज होता है उससे भी डैमेज होता है तो सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दैट आल्सो सो देयर आर n number of factors we cannot enumerate 1 2 3 like for that like that but the thing is कि इंडोर्स में रहने से भी सनस्क्रीन लगाना है ओके. That is अच्छा, एक तो हम जानते हैं सनस्क्रीन में लिखा होता है यूवीए यूवीबी रेस से वो हमें प्रोटेक्ट करता है. आजकल ये भी लिखा आ रहा है कि ब्लू लाइट से या फिर इंफ्रारेड रेस से भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है. तो ये ब्लू लाइट, इंफ्रारेड लाइट्स ये क्या है, कहाँ से एमिट होती है? सी ये पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जब सन से रेज निकलती हैं कि तो वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया गया है बस इतना ही इसमें लाइक वी शुड नो एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफरेंट दैट इज व्हाई इतना स्पेसिफाई किया गया है यूवीए ज्यादा पेनिट्रेट होता है यूवीबी की ब्लू लाइट की इंफ्रारेड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डैमेज होने की संभावना है लाइक व्हाट वी आर फियरिंग इज ऑफ पिगमेंटेशन but genuinely what we should fear is of cancer while photo exposure हम इंडियन लोगों को ज्यादा ये रहता है कि काले ना हो जाए नो वी शुड फियर कि ज्यादा सन एक्सपोजर से कैंसर ना हो जाए जो मेलानोमा और व्हाट जो दूसरे कंट्रीज में पीपल आर कंसर्न दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग सनस्क्रीन बिकॉज दे डोंट वांट कैंसरस स्किन लीजन्स नो वी शुड लाइक इन आवर माइंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि हम सनस्क्रीन काले होने से बचने के लिए लगाए नो इट्स नॉट we should protect our skin from cancerous lesion. That is the whole point of using sunscreen. Right. So from skin cancer perspective or skin Definitely. damage or melasma perspective, application of sunscreen is very, very, very important. Very important. Now, the thing is, doctor, despite knowing the fact that we live in a tropical condition here, the heat or humidity is really high and excessive heat is actually bad for our skin. Still 67% of people of India are not using sunscreen. Statistics reveals that. Now, my question is how to address those 65% of people so that they understand it's important and start using sunscreen on a regular basis. Okay. Here हम यही बात कर रहे हैं patient awareness की बात है हर जगह. The main point I would like to add here is कि these 60-70% patients are not using sunscreen, but they are using inadvertent topical steroids, जो markets में over the counter cheaply available है, like 50-60 rupees. Steroid creams are available, जिसको लगाने से especially melasma people they misuse those creams like anything. उससे क्योंकि मैजिक होता है एक महीने में पूरा चेहरा लाइक शाइन लाइक सन बट वो इतना ज्यादा डैमेज कर देता है स्किन को कि उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है सो दीज क्वेश्चंस लाइक आपने बोला कि पेशेंट को कैसे समझाएं दीज ऑल कम अंडर पेशेंट अवेयरनेस लाइक एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं लाइक वी आर डूइंग दिस लाइव सेशन एंड ऑल सो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करी जा सकती है अदरवाइज नथिंग कैन बी डन बिकॉज उनको अवेयरनेस होना जरूरी है advertisement is the main thing I think. Yeah.
Another big obsession in our society is to have fairer skin, and that's the use of Definitely. fairer creams. And of course, they also have steroids, etc., as you were talking about. And we end up, worsening our skin condition rather than making it more healthier and even toned, etc. Definitely. बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ओवर द काउंटर क्रीम, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए सनस्क्रीन बहुत आसान है, सनस्क्रीन लगाइए जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, री-एप्लीकेशन या कितना अमाउंट लगाना है वो लगाइए और आपकी स्किन को हेल्दी बनाइए। डॉक्टर ये भी एक बहुत जनरल कंसर्न होता है कि क्या-क्या करें हम अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे आजकल वीडियोज़, इन्फ्लुएंसर्स इतने वायरल हो रहे हैं और हर एक नई चीज बताता है। तो ऐसे में people are really confused and they end up buying a lot of product and try them all over their skin. क्या सही तरीका है स्किन केयर का? बहुत इजी, ताकि जो जिनका एक हेक्टिक रूटीन है वो भी अपना सके। What I think is skincare routine should be very simple. Don't make it messy. Don't make it complicated. Just you have to follow 3 basic steps: cleansing, moisturizing, and application of sunscreen. That's it. There's nothing more than this which is required. I don't know what the advertisements are coming and all. We can't control that, but आपको अपना दिमाग लगाना है और जो स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड में उनकी बात माननी है, एंड यू शुड गो फॉर अ वेरी सिंप्लीफाइड बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आप लॉन्ग टर्म तक परसिस्टेंटली यूज कर सके। 1-2 महीना कुछ भी चीज यूज करने का लाइक नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट। यू हैव टू बी persistent in anything to see an effective change in your skin. So there's only 3 components. First is cleansing, second is moisturizing, and third is application of sunscreen. That's it. Okay. And as you said, sunscreen is the most important, Most component important. of your skincare routine, daily skincare routine. जब भी हम sunscreen खरीदने जाते हैं, there's a term, rather abbreviation, SPF, and there are various numbers, associated with it: 15, 20, 30, 40, 50, 60. Now people are really confused, कौन सा SPF हमारे लिए best होगा, उस पे please थोड़ा बताइए। SPF is, as you all know, sun protection factor. Ideally, हम जिस country में रहते हैं 30 is sufficient. SPF 30 is sufficient. If you go for a higher one, you can go, but there's no use. But SPF 30 should be the minimum thing. उसके नीचे काम नहीं करेगा. Like 30 is the ideal and sufficient thing you should go for. Right? Okay, so 30 SPF fair enough है. Yeah, fair enough. लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा, जिनका एक्सपोजर धूप में होता है, जो फील्ड में काम करते हैं, या जिनका बहुत ज्यादा स्विमिंग या वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा वो लोग होते हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए अलग तरह का सनस्क्रीन या अलग SPF लेना बेहतर होगा? जो क्रॉनिकली एक्सपोज रहते हैं, आई सेड नो, री-एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो क्रॉनिकली एक्सपोज रहते हैं स्वेटिंग और सबकी वजह से थोड़ा वॉश आउट होता है वो प्रोडक्ट। And second is, as far as swimming is concerned, you have to choose a vehicle which is water resistant. So that should be the selection criteria, not SPF, more or less. The vehicle which we choose and the re-application. और जैसा कि आपने बताया कि अगर घर में ऑलरेडी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पिगमेंटेशन या मलाज्मा का इशू है, तो हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, सनस्क्रीन एटलीस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो सनस्क्रीन नहीं भूलना है, मलाज्मा से अगर खुद को बचाना है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाना है, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, मलाज्मा के ट्रीटमेंट पर भी हम बात करना चाहेंगे। व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर देयर अवेलेबल फॉर मलाज्मा? Okay, first of all, I would like to add कि melasma patient को like इतना पता होना चाहिए it is a relapsing remitting disease. वो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ठीक कर दिया तो वो हमेशा ठीक रहेगा। वो होता रहेगा, ठीक होगा, फिर वापस आएगा, ठीक होगा, फिर वापस आएगा। तो वो पेशेंट के दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। Otherwise, if they are having any unrealistic expectation or if they are not understanding the nature of the disease, then it creates a very big problem. They should know the nature of the disease. कि ये है कि आपकी स्किन वैसे ही है, स्किन वैसा है तो it's not going to change. Yes, but हम ट्रीटमेंट देके उसको like we can keep it suppressed anyhow. उसको दबा दबा कर रखा जा सकता है, and we are having n number of options. Topical creams are available. आजकल oral formulation भी available है. There are procedures like chemical peeling, injection tranexamic acids,
and laser and all, there are very options, like various options for treatment of melasma. Right. So the good news is that various treatment options are available. So we need to just go and Definitely. consult a doctor, a dermatologist in this case, Yeah. and get relief from whatever skin conditions we have. One more thing, doctor, होता ये है कि जब हमें हार्ट से या किसी दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम उनके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेते, लेकिन स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो हम डॉक्टर के पास सबसे आखिर में जाते हैं। तो सबसे पहले हम होम रेमेडी शुरू कर देंगे। उसके अलावा हम अपने दोस्तों से पूछेंगे, अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट किया होगा तो उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके हम चले जाते हैं और हम ओवर द काउंटर मेडिसिन क्रीम्स जो अप्लाई करने लगते हैं। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन सर्फिंग बहुत ईजी हो गया है। क्या इन सब से नुकसान हो सकता है और क्या वो नुकसान वाकई में बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम बहुत लेट पहुंच रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का टाइम तो बहुत वेस्ट हो ही चुका है। डेफिनेटली 100% नुकसान ही होता है, क्योंकि मेलास्मा वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, जो जनरली दो क्लासेस ऑफ पेशेंट रहते हैं, एक एजुकेटेड क्लास जो है वो डायरेक्टली आता है स्पेशलिस्ट के पास, एक होता है जो थोड़ा सा मतलब दे आर नॉट दैट मच कंसर्न्ड और दे आर नॉट दैट मच अवेयर। वो लोग होते हैं जो इधर बोल दिया, किसी सहेली ने बोल दिया, तो किसी पड़ोसी ने बता दिया, एंड 100% आई शुड से 99% ऑफ द दोज पेशेंट्स दे एंड अप यूजिंग ओवर द काउंटर स्टेरॉइड प्रिपरेशन। उनमें फिर 1-2 महीने में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लाइक दे ग्लो लाइक एनीथिंग एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड उसी तरीके से ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं वो, ओके इसने बताया और पूरा ठीक हो गया मेरा। तो फिर जब खराब होना स्टार्ट होती है वो चीज, लाइक it becomes hell, their face is like anything, like पूरे बम्स हो जाते हैं। जैसे ही हम स्टेरॉइड छोड़ते हैं तो हमारी स्किन बहुत थिन हो जाती है, अंदर का वास्कुलेचर दिखने लगता है, बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है स्किन, और हम एक्ने के लिए भी बहुत ज्यादा, लाइक पिंपल्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। एंड देन दे कम टू अस सेइंग कि अब इसको ठीक करो, एंड ऑल दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, देन it becomes very difficult to tackle those patients, because we have to deal with their psychology also, not only with the disease per se, but the psychology of those patients. So उनको ऐसा लगता है स्टेरॉइड से ठीक हुआ है, but they don't understand the fact that कि उसी से खराब हुआ है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करवाने में it takes a hell lot of energy. Right. तो इसीलिए वक्त जाया ना करें. If you have, any kind of patches on your skin or anything that's bothering your appearance, or you please go and consult your doctor. You'll get early relief. तो time waste मत कीजिए. Over the counter medication बिल्कुल मत कीजिए. ये बहुत जरूरी है. कुछ questions भी हम डॉक्टर ले रहे हैं हमारे viewers के. प्रियंका राजपूत पूछ रही है, I have been facing melasma issues from past 2 months. I already have a lot of darkness around my mouth and on my eyelids from childhood. And now because of melasma situation, the whole thing is, getting worse. I have breakouts regularly and my skin has become very oily. I wash my face for every 3 to 4 hours and still it becomes oily within 2 hours. What should I do? Okay, first of all, you are having n number of problems. We have to rule out the first thing, which I am just saying continuously, whether you have used over-the-counter steroid or not. Is there any history as such? Then we have to deal it separately. The second, you should not wash your face this frequently, because moisture loss हो जाता है, barrier loss हो जाता है, जिसके कारण से और ज्यादा secondary infection और ज्यादा acne prone होती है skin. Acne is more about secondary infection rather than increased oiliness of the face. So इतना frequent washing तो आपको नहीं करना चाहिए, and definitely you should consult any dermatologist nearby you, because जो आपकी problems हैं उसको बहुत wholesome तरीके से care लेना पड़ेगा. Also, you have to confirm whether you are saying it is melasma. Is it melasma or not? That thing is very much important to confirm कि वो melasma ही है या कुछ और ही pigmentation हो रहा है आपके चेहरे में, and thus then only we can decide any treatment remedies. Right. तो इसके लिए प्रियंका प्लीज अपने डर्मैट के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है और क्या इसका इलाज होगा. फॉर द मीन टाइम आप जो बार बार 3-4 घंटे में फेस वॉश कर रहे हो वो मत कीजिए. आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं you'll get, they'll get stripped. राजन सिंह पूछ रहे हैं, why do women get melasma when they are pregnant? Yeah, as I said, the causes of melasma में one important thing is hormones. So
ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज के बाद बहुत सारे हॉर्मोनल अप डाउन इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से मेलास्मा इज मोर प्रोन इन पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप। ऑल्सो इसी वजह से प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल्स को, उस समय मेलास्मा उनमें होता है, जिसको अलग एक टर्म दिया गया है, क्लोएस्मा। So it's mainly due to the estrogen component or estrogen hormones, we should say. ओके, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप चले भी जाता है या हाँ, उसको लेकर ज्यादा प्रेगनेंसी परेशान होने की जरूरत? प्रेगनेंसी वाला ग्रेजुअली शेड ऑफ हो जाता है, बिकॉज वो नॉर्मलाइज हो जाता है, बट पोस्ट मेनोपॉजल जो है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सलोनी पूछ रही है मैम, क्या मेलास्मा परमानेंट होता है? मोर और लेस यस, आई शुड से। हम दबा के रख सकते हैं, बट आई कैन नॉट से कि इट कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली। नो, इट कैन नॉट बी क्योर्ड 100%। दैट्स ट्रू। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपके फेस पे कुछ स्पॉट्स या पैचेस आ रहे हैं, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए, इससे पहले कि आपके पूरे चेहरे पे वो पैचेस जो है वो भर जाए और उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। सुमित कुमार पूछ रहे हैं मैम, इज गायकोलिक एसिड गुड फॉर मेलास्मा ट्रीटमेंट? Yeah, definitely. These are mainly AHA, BHAs are used, which acts over epidermal and dermal layer of skin to decrease the melanogenesis. So definitely those creams are very much important for the treatment of this. बट सुमित, आपके डर्मैट आपको बताएंगे, तो प्लीज खुद से कोई चीज कैसी है और खुद से ही परचेज करके मत लगाइए। आपकी कंडीशन क्या है, मेलास्मा है या हाइपरपिगमेंटेशन है, क्या उसका रीजन है, बहुत कुछ है जो पता लगाना है, तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मैट। सुमन यादव पूछ रहे हैं, इज मेलास्मा ड्यू टू सम एलर्जी और इन्फेक्शन? No, no, it's not due to some allergy or any allergy or infection. It's just a skin type, or we can say photodamaged skin in a specific form. Okay. It's not due to any allergy or. Okay. Sonia Singh पूछ रही है, how do I get rid of these scars left by the lichen planus skin infections? Is there a way to prevent a relapse? The only way to prevent a relapse is to continue taking medicines. Like, we have to suppress that disease, because once again, lichen planus is an autoimmune disease, and that has to be suppressed only. We cannot completely cure that. And the hyperpigmentation which is left after lichen planus, that will shed off over time. We don't have any such medications for that. Glycolic acid can be used, but only to an extent, not completely. Exactly. शेखर मिश्रा है, जैसे हम बात कर रहे थे कि होम रेमेडी कई लोग करते हैं, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन इनका है, हैज एनीवन सक्सेसफुली गॉटन रिड ऑफ मेलास्मा और हाइपरपिगमेंटेशन असाइड फ्रॉम यूजिंग लेमन और ACV, एप्पल cider vinegar? What works? As of now, I haven't come across anyone who has completely cured their melasma by using lemon juice or whatever. And one thing I need to add here is, we should not use lemon juice directly over our face. Yeah, otherwise many cases जब वो अपनी skin होता है, yeah. Yes, yes. बहुत सारे केसेस होते हैं जहां वो लेमन यूज करके अपनी स्किन को ऑलमोस्ट जला देते हैं, and then they go to the doctor. जलेगा ही, yes, definitely. So that thing should be taken care of. Okay. So Shekhar, please keep off of lemon or ACV anything. Just go and consult your doctor. That's important. Palak Dubey पूछ रही है, I'm having melasma in my face for 3 years. That too, it had spread a lot. I have done many treatments, but it is not getting better. What should I do? First of all, you should consult your specialist. That must I say. But adding on, you can start tranexamic acid tablets. You can go for injection tranexamic acid. Also, glycolic acid chemical peeling, chemical peeling which is there. So you can go for these treatment options after consulting your dermatologist. Definitely, it would be helpful. Okay. एक और क्वेश्चन है कि क्या ट्रीटमेंट से मेलास्मा जाने के बाद फिर से हो सकता है? तो एक बार अगर ठीक हो गया तो फिर से हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एक बार चला गया तो वापस नहीं होगा. इट कैन कम. अच्छा डॉक्टर, हम ये भी बात कर रहे थे कि स्किन कैंसर से हमें अपनी स्किन को बचाना है. सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो
हम टैन हो जाएंगे या डार्क हमारा टोन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या मेलास्मा जो है वो स्किन कैंसर में तब्दील हो सकता है? No, now here comes the difference. See, melasma या hyperpigmentation, I should not say per se melasma. Melasma एक disease की category में आ गया. Hyperpigmentation जो होता है हमारी skin में, it is a sort of protective mechanism for cancerous lesions. क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं उनको टैनिंग नहीं होती है, उनको सीधे रेडनेस हो जाती है जब वो धूप में जाते हैं. सो वो रेडनेस प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है स्किन कैंसर से. बट हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है. दैट हाइपर पिगमेंटेशन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्किन कैंसर. सो टैनिंग इज अ गुड थिंग इन अ वे फॉर स्किन कैंसर. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इंडियंस जो है थोड़ा सा रिस्क हमारा कम है स्किन कैंसर के लिए. हाँ, डेफिनेटली. बिल्कुल. लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हम एनीवेज बहुत प्रोन है और इससे बचना है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा. अगेन जब भी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेलास्मा से बचना है या उसको रिस्ट्रिक्ट करना है. तो ऐसे में दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ऑयली या पैची हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेट करती है. तो ये जो तमाम चीजें हैं इनसे कैसे वो दे नॉट यूजिंग द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन, या फिर हम जब एक इंडिविजुअल के लिए सनस्क्रीन लेते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? That depends just upon a selection of sunscreen. I said no, vehicle is important. Whether you are using gel based, you are using oil based, you are using cream based or matte finish or whatever. The vehicle is important according to the skin type. इसलिए you should consult a dermatologist. They have a rough idea कि कौन से स्किन में किस टाइप का सूट करेगा and they prescribe accordingly. और ऐसे भी जिस तरह से आप बता रही हैं डॉक्टर जैन, ऐसा लग रहा है कि सनस्क्रीन एक चीज है जो हमें सबसे लंबे वक्त तक अपने स्किन में लगाना है, बहुत पहले से लगाना शुरू करना है, रोज लगाना है, एटलीस्ट 3 बार लगाना है और लगाते ही रहना है. तो ऐसे में क्या हमें सनस्क्रीन चूज करने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट हो गया है हमारे स्किन केयर का, एक बार डर्मैट से पूछ लेना चाहिए, मे बी वो हमारे स्किन कंडीशन, हमारे वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से एक बेटर सनस्क्रीन सजेस्ट करें? Definitely, because they are able to assess your skin type, which you are not able to. So they will assess your skin type, they'll see your problems, and they'll prescribe a sunscreen which suits your skin. So definitely, you can't go just shopping and shopping on and off. Exactly. So you should go for an like solid option. Then there are two, kind of people, A, who are very prone to acne, whose skin are very prone to acne, and B, who have sensitive skin. ये भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सही सनस्क्रीन क्या होगा, या एक्ने प्रोन स्किन पे क्या हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं. सो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? Like there are, just I said also previously, there are no exceptions for sunscreen. Acne हो नहीं हो कुछ भी हो, like sunscreen तो लगाना ही है. हाँ, but you should keep in mind अगर acne prone skin है तो non comedogenic sunscreens आते हैं, या there are special sunscreens made for the people who are prone for acne. They are gel based, they are not like oil based. So इस तरीके के sunscreens available है market में. You should opt for that. And as of speaking for sensitive skin लोगों को जनरली फिजिकल सनस्क्रीन टाइप का कुछ यूज करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि कुछ भी लगाने से दे स्टार्ट लाइक इचिंग, बर्निंग और एक्सेट्रा. सो दे शुड गो फॉर ए वेरी माइल्ड सनस्क्रीन. दैट इज द थिंग. फिजिकल सनस्क्रीन का आपने जिक्र किया, थोड़ा आप एलैबोरेट करके बताएंगे क्या होता है फिजिकल सनस्क्रीन? फिजिकल सनस्क्रीन लाइक जितना वो होना चाहिए, लाइक फिजिकल सनस्क्रीन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो ऐसा सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड रहता है, टाइटेनियम ऑक्साइड रहता है एक, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो एक टिंट छोड़ देता है चेहरे में. पिंक टिंट होता है ना कई बार सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत लोगों को, कि एक पिंकिश ह्यू आ रहा है, तो वो सब फिजिकल सनस्क्रीन का रहता है. एंड फिजिकल सनस्क्रीन इज प्रेफर्ड फॉर पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब बच्चों में फिजिकल सनस्क्रीन दिया जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उसका. जस्ट एक ये जो केमिकल्स हैं वो एक लेयर बना देते हैं स्किन के ऊपर, और उसी से सन रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. तो राइट, तो फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं बच्चों पर, या फिर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है. अर्पित सेन है, पूछ रहे हैं, उससे पहले मैं आरती मीना का क्वेश्चन लूंगी. आर देयर एनी नेचुरल रेमेडीज टू कॉम्बैट मेलास्मा?
There are no such as confirmed therapies or natural remedies for melasma. You can go on for things like multani mitti, etc. I don't know. They don't have as such any scientific basis. Yes, but two things are there. Like curd, what we say, it contains lactic acid, which is actually proven for treatment of hyperpigmentation. But these things generally don't work because हम controlled form में इसको use नहीं करते. लाइक क्रूड फॉर्म में लगा देते हैं, तो क्रूड फॉर्म में कोई भी चीज जितना वर्क नहीं करेगी उससे ज्यादा साइड इफेक्ट देगी आपको. सो द थिंग इज कि प्रोडक्ट्स जो नेचुरल है, ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड जो है वो केमिकल पीलिंग में भी यूज होता है या कर्ड में भी होता है, बट केमिकल पीलिंग में हम कंट्रोल्ड फॉर्म में उसको लगाते हैं. लाइक कर्ड आप लगा लोगे तो इट्स नॉट कंट्रोल्ड, वो साइड इफेक्ट्स भी देगा आपको, बहुत सारी चीजें देगा. सो इट्स नॉट प्रिफर्ड एक्चुअली. एंड कई बार हम होम रेमेडीज पर इतना भरोसा करके उस पर इतना वक्त जाया कर लेते हैं कि तब तक हमारी कंडीशन जो है, अगर हम बनस्पत पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो हमारा कंडीशन शायद थोड़ा बेटर हो जाता, लेकिन हम इन्हीं सब चीजों में बहुत सारा वक्त ही लगा देते हैं. इसलिए भी जरूरी है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाए. नेहा चौधरी पूछ रही हैं, डू सर्टन फूड्स अफेक्ट मलाज्मा? खाने पीने का या फूड आइटम्स का भी फर्क पड़ता है? उतना नहीं, लाइक नॉट ग्रॉसली उतना इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर रोजेशिया की बात करें तो उसमें फर्क पड़ता, जिसमें एग्जैक्टली जहाँ मेलाज्मा के लीजन्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेडनेस होती है. लोग अगर स्पाइसी फूड खाते हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है तो यस रोजेशिया में होता है, बट नॉट फॉर मेलाज्मा. इतना फर्क नहीं पड़ता है मेलाज्मा में. ओके. पारुल बोकाडे पूछ रही हैं, हु इज एट रिस्क ऑफ मेलाज्मा? या जिनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है मेलाज्मा की. सेकेंडली जिनको प्रेगनेंसी के समय हुआ है मेलाज्मा या क्लोएज्मा. थर्डली जिनकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, या जो वर्किंग पैटर्न है वो आउटडोर्स में बहुत ज्यादा है. तो ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो मेलाज्मा के फेवर में जाते हैं. रिस्क फैक्टर्स. ओके. डॉक्टर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं विद मेलाज्मा और हाइपरपिगमेंटेशन, तो कई बार होता है ना कि डॉक्टर देख के कहते हैं, अरे तुमने बहुत लेट कर दिया आने में, पहले आते तो आराम से ट्रीटमेंट हो जाता, या तुमने ये दवाइयां क्यों ले ली, ये नहीं लेना था, ये क्रीम क्यों लगाया. तो ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं और ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लेंदी हो जाता है? द वन एंड ओनली थिंग जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है वो ओवर द काउंटर स्टेरॉइड एप्लीकेशन. वो जो है दैट इज द वन थिंग जो चेहरे को पूरा बिगाड़ भी देता है. एंड वो लगभग ट्रीटमेंट प्रोसेस को अलग डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है हमको. मेलाज्मा से हटा के जो स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट हुए हैं उसको ठीक करने में ही टाइम निकल जाता है. तो मेलाज्मा एक सेकेंडरी चीज हो जाती है. उसकी वजह से जो स्किन थिनिंग हुई है, उसकी वजह से जो रेडनेस दिखता है, उसकी वजह से इचिंग, एक्निंग वो होता है, उसके ट्रीटमेंट डायरेक्शन में वो चला जाता है, मेलाज्मा साइड हो जाती है. सो दैट इज द थिंग, टॉपिकल स्टेरॉइड अब्यूज शुड नॉट बी देयर. इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन मत कीजिए, दोस्तों के बताए क्रीम्स मत लगाइए, स्टेरॉइड्स होते हैं. अच्छा, एक और चीज होती है, लोग कहते हैं कि अच्छा हम दुकान से खरीद के भी स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी तो स्टेरॉइड ही देंगे, तो उसको लेकर क्या आपका रिप्लाई रहेगा? उसको लेकर ये स्टेरॉइड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. एंड जो ओवर द काउंटर प्रिपरेशन होता है सेम थिंग, कंट्रोल्ड नहीं होता, वो आप रैंडमली लगा रहे हो उसको. एंड जब डॉक्टर एक प्रिस्क्राइब करता है तो स्पेसिफिक परसेंटेज, स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब करता है. उसको पता है कि कहाँ साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कहाँ तक इफेक्ट आएगा. सो कंट्रोल इज द थिंग, यू नो, control is the difference between over the counter and any steroid prescribed by the doctor. They have control, but you don't have control over that thing. एग्जैक्टली. डॉक्टर को पता है कि कितना देना है, कब डोज कम करना है, कब डोज बंद करना है, ये बहुत जरूरी रहता है. तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये पूरा सेशन करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आपको बता सके दी ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक हो सकता है. तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम डू गो एंड मीट योर dermatologist. And doctor, as we are moving towards the conclusion part of the session, any take away message for our viewers, हमारे viewers को मलाजमा ना हो या उनकी स्किन हेल्दी रहे और दिक्कत हो भी तो वो सही ट्रीटमेंट ले सके, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? Okay, I would like to sum up the 3 takeaway things. First of all, just follow a basic skincare routine which you can follow persistently over years, which consists of cleansing, moisturizing, and application of sunscreen. Second, don't or never use over the counter
प्रिपरेशंस, जो भी बताया आपको। एंड थर्ड, लाइक मेलास्मा अगर हो गया है, लाइक कीप वन थिंग इन माइंड कि वो होता रहेगा, जाता रहेगा, होता रहेगा, जाता रहेगा। देयर इज नथिंग लाइक 100% जड़ से मिटा दो ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक मेडिसिन, एंड देयर आर मेडिसिन जो उसको सप्रेस करके रख सकते हैं। सो डिसहार्टन होने की बात नहीं है, हाँ, बट रियलिटी चेक भी होना चाहिए थोड़ा दिमाग में। एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर मोनिका जैन, बहुत अच्छी बातचीत आपसे डॉक्टर हुई, बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझाया, और हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ और सेशंस हम आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पर जरूर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। And viewers, thank you for your active participation. And for more updates, stay connected to Beautiful Spotless Skin. Thank you. Goodbye. Have a great day ahead.